Yeah. So you have to write your name, right? Your parents' name and their contact name and their WhatsApp number, in fact, right? Because we will be sending them the recording link so that they can also assess how you have participated and what is your performance in today's session. Okay? Name and your standard also. Okay. Please type these details in the comment window and you can send it directly to me. Okay. So Faizan, you have to rename yourself. So you are Faizan Pathan, right? Change. Okay. All of you, please type these details and switch on your camera quickly. Without that, I'll not be allowing you to sit in the class. If your camera is not working, it's okay with me, but you have to at least start your mic and respond. Start your mic and respond. We have Chetna, we have Karman, and yeah. Hi. What's your name, dear? Karman is your name? Carmen, Sir Karman. Carmen, Yeah. Hi, yes, Karman. You are in which standard, Karman? Ninth or sixth? nine, so nine, Ninth standard. You are CBSE. aware about trigonometry? Yes, sir. Okay, but I'll be teaching trigonometry, so it might not be very interesting for you, but again, you just have to respond, you just have to participate. Okay, I know that you have done, I think you have completed your 10th standard portion also. Yes, sir. So this will be quite Sir, I have a grounded. doubt. Yeah, ask who is having a doubt. Sir, Sumanyu. Yeah, Suman, pucho. Please give me these details, kids, quickly. Sir, which syllabus do we follow? We follow CBSE board syllabus, NCERT textbook, flow of Sir, of 11th which? and 12th standard. Okay, sir. The flow with this is what the flow which we follow is this flow. Okay. Please give me these details quickly, kids. I'm waiting for your responses. This is I'm asking for this. I'm asking for your. You can send it to me directly to your my. You can send it personally to me in the chat window, right? We will be sharing the link of the recorded session today, and we'll be sharing the feedback also. So for my team should not be looking for your number across all the data, and it's very difficult to do that. Aryash Tiwari, please switch on your camera and give this detail. Hi Aryash, you are in which standard? Unmute. Hi Kirti, you're Kirti, right? Okay, great. I'm waiting for these details. Please do it quickly. We have already invested 5 minutes in this. 2 more minutes to go. Meanwhile, you keep typing, right? These three details, your name, standard, and your parents' name and contact number, their WhatsApp number preferably, and please send it to me directly in my chat window. Okay, great. Please give me your father's name also. Okay, Satvik, your dad's name. That's great. Thank you so much. So now we are starting with the session today. So Karman, what I'll do is, you have sent me a number. I'll send you some recordings of mine of vectors also, right? Vectors and calculus. You go through that also. Okay, because you have already done trigonometry, so you will not be. It's a known topic for you. So the very objective of this session is, you will learn from an unknown teacher an unknown topic, right? And how you are able to understand it. Number one, whether you are able to follow my style of teaching or my way of teaching or not, right? And also, I want to assess what is with your academic inclination, how are you able to grasp this topic? How is your grasping? That is very important for me, right? Then only everything fructifies.
or everything will fall in place, or else there is no point in going ahead from here. Okay. So please, Kirti, Aryash, Karman, Sumanyu, Faizan, and Mr. S. You are S. Panigrahi, and your name is, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? Mr. Panigrahi. चलिए. So let's start with the session. चलिए. So this session will end around 9:45, 9:50. Okay. This session will end around 9:45, 9:50. So this is trigonometry for you. So the session, this is trigonometry. So what is trigonometry? Anybody who wants to help me with the definition of trigonometry or explain what is trigonometry to all of us? Let's Karman have this privilege. Yes, Karman. Go ahead. Yes, you can. Acha, you can't unmute yourself? Oh, my bad. So please, you can unmute yourself and now answer it. Trigonometry is the basic formula which we use to calculate the height of something. An example Okay. for this can be like, let's say, Mount Everest. Now we don't have a tape measure that long to measure Mount Everest. So what we can Okay. do is we take a base, so how far back we are from Mount Everest, and then we calculate our angle. Okay. And Good. then we use further formulas to calculate what's the height, total height of Mount Everest. Okay. So you showed a practical way of using trigonometry, right? How to use trigonometry. So trigonometry is a branch of mathematics where we deal with or where we learn about. All of you, please pay attention. We have Kirti, you are in which standard? Ninth grade. Ninth grade. And Sheetal 16 Pro. What's your name, dear? So trigonometry is a branch of mathematics where we learn about the relations between the sides and the angles of a triangle. Right? This is what is trigonometry is all about. Right? Based on this, when we know about these relations, then we can actually extend it to practical applications like measuring the height of a mountain, right? If we know the distance of the person from the base of the mountain, like that, right? So technically, it is a branch of mathematics where we learn about the relations between the sides and the angles of a triangle. Okay, all of you. I hope everybody understands this. Yes or no? Kids, you have to answer. भाई सुनो सब लोग Yes, sir. पहले आ जाओ जल्दी Yes, sir. भाई Yes. there are certain rules which you have to follow. Please follow it. It's very important, right, for me to understand whether you are understanding or not. So when I am asking you whether you understood or not, so please say yes or no. If you say no, I'll ask you what you have not understood. I'll try to make you understand that particular thing. Okay? If you ask me 10 times, I'll explain it to you 10 times. ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया? Those of you know who know Hindi, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? क्या चाहता हूं मैं आप लोगों से? हाँ? And those of you who have not switched on your camera, please switch it on. It is very important for us to connect. If we don't build the connect between us, there is no point of taking online classes. There are only three things by which we can connect. First, of course, we should have a very good internet connection, but your camera, your voice, and your hearing ability. These three things will help us connect with each other, right? So, Karthik, Kushagra, Sheetal, S. Panigrahi, Prayag has switched on his camera. Hi, Prayag, you are in which standard? Ninth class. Ninth standard. Okay. So those of you, again, those of you who have joined just now, please share these details with me so that we are taking these details because we will be sharing the recordings of today's session with you, right? And so that you can have this as your reference.
lecture, plus you can check how well you performed in this. So please type these details in the comment में. सर Okay? चैट में पूछना है ये? हाँ जी चैट में लिखना है. आप मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं चैट में, ठीक है? ओनली टू मी, ओनली टू होस्ट करके भेजोगे तो मेरे पास ही आएगा, ठीक है? So trigonometry is a branch of mathematics where we learn about the relations between the sides and angles of a triangle. All of you are aware about it, right? Yes or no? Yes, sir. नो सर. है ना? No? कौन बोला नो? सर सुमन्यु. सुमन्यु जी, आपको ट्रायंगल पता है? यस सर. एंगल पता है? यस सर. और साइड्स भी पता है? यस सर. तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम जिस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं बेटा, उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री. यस सर. वही बोला मैंने, ठीक है? यस सर. यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? सर इन बोथ. बोथ ना? हाँ, ठीक. That's great. So now, before I move ahead, I am introducing you to some of the Greek alphabets. We will be using these Greek alphabets as symbols. Are used as symbols to represent the angles of a triangle. Right? Why we are using this different language alphabets? Because they stand out. They are different from English alphabet, so they stand out and they will show some kind of uniqueness to the angles, right? So that's it. So the alphabets are, first one is alpha, right? Second one is beta. Third is gamma. Fourth is delta. These are some of them, right? So I'll be using these, theta, and the last one is phi. ठीक है? So alpha, Trigonometry. आप लोग जो है अपने माइक को म्यूट पे रख सकते हैं when you are talking to somebody else, ठीक है? तो alpha looks like this. Please pay attention. Alpha looks like this. Beta, this is how beta is denoted. This is how gamma is denoted. This is delta. This is theta, and this is phi. Alpha, beta, gamma, delta, theta, and phi. These are the symbols which we will be using in today's session, right? Now comes the triangle. The triangle with which we will deal today is a right angled triangle. The triangle with which we will deal today is a right angled triangle. So this is a right angled triangle. This is A, this is B, this is C, and this, let's say this angle is theta. Let's discuss this angle theta. Now, all of you can see here that there are two acute angles. Yes or no? यस सर. है ना बेटा? There are two acute angles, right? Kirti, Karman, Prayag, Sheetal, oh, Arit, Yes, sir. Manvik, Yes. Alden, Yes, sir. है ना? यस सर. बच्चों प्लीज अपने नाम से लॉग इन कर लो. मुझे बहुत दिक्कत होती है, किसी का सर सिर्फ नाम आधा लिखा है आधा नहीं लिखा है, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को. ओके, सो देयर आर टू एक्यूट एंगल्स हियर, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस 90 डिग्री एंगल, देयर आर टू एक्यूट एंगल्स. तो दिस द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स take names or are named based on the angles which we are using. In a right angle triangle, the sides of the angle are named according to the angles which we are using. And this is, in this case, please pay attention. In this case, the side opposite to theta, this angle has a unique name and it is called as perpendicular of the triangle. This is the perpendicular and represented as P. Right? The side opposite to the angle is perpendicular. And the side which is perpendicular to perpendicular is
साइड ए बी, राइट? परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर कौन है? द साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉल्ड एज बेस and this is B. Okay, so perpendicular and base, these are the two sides of this triangle. Okay, now this side is common to both this side has a constant name, right? This name will not change, and this is hypotenuse, and all of you are aware about it, right? H. Any kid who is in 7th standard, anyone who is in 7th standard? None? Okay. Sir, Move I on. have a doubt. हाँ, पूछो पूछो, तुम कौन? Please say Sir, your name Sumani. before you ask. Yes, Sumani, ask your. Sir, perpendicular can be called as height. Yes, yes. इसको हाइट भी बोलते हैं, राइज भी बोलते हैं, ठीक है? बट अभी के लिए वी शुड नॉट कंफ्यूज विथ नेम, सो आई एम जस्ट कीपिंग वन नेम ओनली, दैट इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. ओके? Yes, sir. नाउ अबाउट दिस, if I say this is a new angle, if we talk about this angle, which side, all of you type your responses in the comment window, don't answer it on mic. Which side will be perpendicular for this angle phi? Type the responses in chat window, please be quick. Can you repeat? Which side will be perpendicular if we take this angle phi? Very good. So some of you have answered it. Very good. Very good. So it is side AB, which is, किसने no side लिखा है? हाँ. So side AB, which is perpendicular, which is opposite to phi, will be perpendicular when we will use this angle phi. I hope all of you understood this, right? So abhi ke liye I am just removing this. All of you please remember this, okay? Now, so we know about sides of the triangle. We know that there are three angles of a triangle. Now comes how to establish. As I said, trigonometry is a branch of mathematics where we learn about the relations between the sides and angles of a triangle. So, how to establish a relation? The question is, how to establish a relation between the sides and the angles of a triangle? So, here comes the functions of trigonometry, right? So, all of you, tell me, what do you know about functions? What are functions? Kirti, any idea about what are functions? I'm not talking functions in general. How will you explain function if you are asked to explain? No idea. No idea. Function. Aryash? So function is Sort the of. function is the role played by an organ, by a part, or by a formula, or such like things. Okay. Okay. Prayag Veer Singh. Yes. Any idea about what can be functions? A function is capability of some. Okay. Karman, any idea about function? Things we use in maths like subtraction, addition, multiplication. Literal meaning. So can I answer? Okay. Prayag Veer wants to answer. Yes, Prayag. So capability of anything to do something. Yes. Capability of anything to do something, right? A specific act or job performed by an object. That is what can be called as a function of that particular thing, right? So, for example, the remote of your television controls the television, right? Every button on that remote has a different function. Yes or no? है ना? So Yes. here also, always remember that there are certain trigonometric functions, right? There are certain trigonometric functions, and these are basic trigonometric functions which we will be dealing with in today's session.
Now, these trigonometric functions, they will relate the angles and the sides of the triangle. These trigonometric functions will relate the sides and the angles of triangle. How? Use of something. Very good. Okay. So now trigonometric functions are, acha, before I move ahead, right? How do you operate your television? Of course, by using a remote. If you want to operate, if you want to increase the volume of your television, how do you do that? There is a button, volume up and volume down button in your remote, right? And you give input to that by pressing it. Yes or no? Yes, sir. You give input. You give input. Yes, sir. What is your desired output to increase or decrease the volume of your television? Yes or no? Say Yes, yes or sir. no. The output we desire is to increase or decrease the volume of our television. Now, what do? We simply use our remote and press the button, the up or down volume of the button, okay, of the remote, and that is how we increase or decrease the volume. So every function to give an output, always remember this, every function to give an output, we need three things. So just pay attention, beta, this is very important. So every function to give an output, we need three things. First one is a desired output. An output is always desired, right? To get this desired output, there is some required input, right? Now, what is this desired output in this example of TV and remote? Desired output was control the volume, controlling the volume of television, right? Don't write it. Don't write it. I'll give you time to write. So controlling the volume of, please mute yourself or I have to. So controlling the volume, right? This is desired output. Okay. How do you do this? Required input is pressing of the volume button, putting pressure on the volume button of the remote, right? Now, what does this do? When you press, there is some electrical circuit which gets connected. So we say that the pressing connects, sends the electrical signal after certain connection in the circuit is built. It sends the electrical signal and we get the desired output, right? So there is an operator which performs on pressing of this button. So every function, these all three things taken together, please remember this. These three things taken together are function, constitute a function, right? Function के पास अपना required input होता है, there is an operator and then there is a desired output. I hope all of you understood what primarily is function. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right? sir. So in trigonometry also, what was our output? What is our desired output? To get a relation between the sides and the angles of triangle. So there are 6 basic trigonometric functions which does this in different ways. First function is sine. This is in short written as sine, S-I-N, right? Then there is cosine. In short, it is written as cos. Then there is tangent. In short, it is written as tan. Then there is cosecant. In short, it is written as cosec. Then there is secant. In short, it is written as sec. And then there is this cotangent. In short, it is written as cot. Right? So these 6 basic functions
they establish a relation between the sides and the angles of triangle. So Second, how? the sixth one, the sixth function. Cotangent, Okay, sir. right? It is cotangent. So in short, it is written as cot. ठीक है? Now, how do they relate, or what is the type of relation which these functions they establish between the sides and the angles of triangle? So here, just pay attention. The first function, the input is given, the input to this function is given, the input which is given to this function is the angle of the triangle. The input which we give here, you can say this is operating on the angle input given to it, right? And when we give the input to this, it becomes the output which it gives is the relation between the sides. So that is P upon H. For sine theta, when we give the input of angle of the triangle to sine, the output which we get is the ratio of these two sides, that is perpendicular upon hypotenuse. Any doubts in this? Any queries if you have, please ask. Sir Sumanyu, I have a sir. doubt. Yes, Sumanyu, पूछो. Sir, how P upon H will come? इससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं. How से कोई मतलब नहीं है. Once we take this ratio and we calculate the height, that's how it comes. ठीक है, इसका बहुत सारा प्रोसेस है, वो पढ़ाने जाऊंगा तो ये क्लास में कुछ नहीं हो. ठीक है. How we can discuss after the session if you want to dig deep into it, right? Yes, sir. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको Okay. there is a objective to it, right? I'll just tell you all of you about this objective. I want to give you an introduction of basic maths, which is essentially required to learn physics, right? Though this is a maths session, but looking into the history of it or going into what can be done, futuristic, very futuristic ideas about trigonometry, I'm not interested in that, right? We are learning simple awareness. We are having simple awareness about what is trigonometry as of now and what comes when we give this kind of input to this function. That's it. Okay, Sumanyu, I hope you understood this, right? Yes, sir. Thank you. Most welcome. Sir, Yes, Karman. anybody else? Yes, Karman. Sir Karman. So Yes. only theta can be used to denote the angle of a triangle, right? Or can Sorry? the other signs be used as well? We can use other side as well. But for that, you have to Okay, change sir. perpendicular and base. Okay, sir. Okay? Yeah. Then comes the second part of it, which is cos of theta. That is base upon hypotenuse. Third one is tan theta, which gives us the relation between sine and cos. So sine theta upon cos theta, this is P upon H upon B upon H, right? And this H cancel out, we get P upon B. So these are the output from these three functions. Now, the remaining ones, fourth one is cosec theta. It is 1 over sine theta. So it's simple to understand and find H upon P. If we know sine, we get cosec. Then comes sec theta, 1 upon cos theta, which is H upon B. And the last one is cot theta, which is 1 upon tan. So the fourth, fifth, and sixth are the inverse of 1, 2, and 3 respectively, right? And this is how the values are given. So what were we trying to achieve here? What was our objective or what was our point of discussion here? How the angles and the side of triangles can be related using these functions. बहुत सिंपल है बेटा, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं. Okay, it's very simple thing. If we give input of angle to function sine, we get the ratio P upon H. If we give the input of angle to cos, we get the ratio B upon H. If we give the input of angle to tan, we get the ratio of P upon B. If we give the input of angle to cosec, we get H upon P. Similarly, for sec, we get H upon B, and for cot, we get B upon P. If you have any doubt in this, please ask, or any queries related to this.
Sir, why these signs are used? Sumanyu. हाँ, क्या क्या पूछना है सुमन? Sir, why these functions are used? To establish a relation between theta and sides of the triangle, the angles and the sides. Sir, can you give real life example? Yes, we have real life examples. Suppose take this, take the height of a building which you can't measure. It's a very high building. You don't have a tape like that, right? If you know Yes, sir. the distance from this building, you can measure this distance, right? The base can be measured, yes or no? Yes, sir. So you measure the base of this build, the distance of this from here, and you can also measure the angle using parallax method, right? If you know about this angle, let's say this angle is say 30 degrees, right? Yes, So sir. you don't know the height, so let's write it as y. But you know this base, and this is say d, right? And if you know value of tan 30 degrees, you can simply write it as y upon d. Okay. You can draw any triangle having this 30-degree angle, yes or no? Yes, sir. It can be a small triangle also. Yes, sir. The values are given in trigonometric table, right? What is value of tan 30 degree? You are aware of it. So y is what? D tan 30 degrees. So though you don't know the height of the triangle or height of the building, but you can use trigonometry to attain, right? Yes, sir. ऐसे करते हैं बेटा इसका प्रैक्टिकल यूज. बहुत सारा यूज है, अभी शुरू ही हुआ. ठीक है? Sir, Can they I ask can the question? only be used in right angles. नहीं, नहीं. ट्राइंगल बोला ना, पर शुरू ट्राइंगल हम राइट एंगल से करें. ठीक है? Yes, sir. Yes, somebody also wanted to ask any queries. So if you don't have any doubts, please go ahead and write, make notes, all of you. Yes, someone wanted to ask doubt. Sir, how to identify theta? Which angle is theta? How do I define that? Ma'am, you can choose any of these angles as theta. Matlab, it's at our will only, right? Okay, And the answer will be once you same. fix the angle, sorry, once you fix the angle, then the side opposite to that angle is the perpendicular and the other side is base. Okay. And sir, another question is you said ki we can measure the height of the building. So how will we find out theta in that case? Ma'am, there are devices which we can Acha use. device. Okay. Huh. Without that, we can't. Even there are parallax methods which we can use, Hmm. right? Right, right. So, Sir, I'm a bio student, so no, same. no worries, I'm ma'am. No, on no, the no, no, same no. level as they Nahi, are. nahi. It's absolutely fine with me. So any question is welcome. But again, Yes, yes. I got it. no worries. Thank you. Please, kids, please, if you have any queries, please ask. If you don't have, please make notes. And once you have made notes, please type done in the comment window. Okay? I am floating a poll also. You can answer the poll. Once you have noted it. Any kid who is in 7th standard? कोई है बेटा 7th standard में? Please answer your polls if you have noted it. सर मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ. और आपका नाम क्या है सर?
सर कुशाग्र। कुशाग्र सिसोदिया नाम है तुम्हारा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो कुशाग्र जी, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अभी सर कम सर, वैसे तो सर थोड़ा कम सा आ रहा है सर। तो अब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ समझ आया कि नहीं आया, तो आप बताते क्यों नहीं है कि हमको सर ये नहीं समझ में आया? आपको बताइए क्या समझ नहीं आया यहाँ पे, अगर आप बताना चाहें तो। कुशाग्र जी, आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया बेटा? सर ये समझ नहीं आया सर। राइट एंगल ट्रायंगल समझ आया? नो सर। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता है तुमको? है सर कुशाग्र? अभी क्लास में नहीं आया। राइट, 7th में राइट एंगल ट्रायंगल, स्केल इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये नहीं पढ़ाते मैथ्स में? सर अभी बुक में ही है सर, अभी चैप्टर नहीं हुआ लेकिन। ओ, अच्छा, एंगल पता है बेटा तुमको? एंगल क्या होता है? यस सर। एंगल पता है ना? तो यहाँ यस पे सर। ट्रायंगल पता है ना तुमको? ट्रायंगल पता है कि नहीं? यस सर। तो ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, देखो, 1, 2 और ये 3। ठीक है? यस सर। 90 डिग्री वाला जो एंगल है, ये यहाँ, इसीलिए इसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? ओके सर। यस सर। ये पहले पूछना था ना, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सॉरी सर। हाँ, पूछो, पूछोगे तो कोई बात नहीं, पूछना है पर, ठीक है? ओके नेवरदलेस, सर। एनी, ऑल ऑफ यू नोटेड इट? Please say yes or no. Please answer the polls. I think only यस सर। one of you has. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. So I'm ending the poll. I'm moving ahead now. So once you know about these sides and angles of a triangle, once you know about the sides and angles of a triangle, and you know about trigonometric functions, now it's time to introduce you to the quadrants of a circle. Please pay attention, kids. So this is a circle. All of you know about circle, right? And I divide this circle into equally into 4 parts. These are 4 equal parts of this circle. ठीक है? This is the first quadrant. All of you please pay attention. So these 4 quadrants are there. Quadrant का मतलब 1/4 of a circle. Quadrant का मतलब it's 1/4 of a circle, right? This is 0 degrees. This is 90 degrees. All of you have seen this in your D, the one which you use to measure the angle, right? 0, Yes, 90, sir. 180, 270, and 360 degrees. Right? 0, 90, 180, 270, and 360 degrees. ठीक है? Now, all of you can see here, there are 4 different quadrants, and each quadrant starts with an angle and ends at an angle. So first quadrant starts at 0 degrees and ends at 90 degrees. Second quadrant starts at 90 degrees and ends at 180 degrees. So this is the second quadrant. The third quadrant starts at 180 and ends at 270, and the fourth quadrant starts at 270 and ends at 360. Right? For namesake, since they mark the start and end of a quadrant, for namesake, we call these angles as reference angles. Let's call these angles as reference angles because they are giving us reference of the start and end of the triangle, sorry, end of the quadrant. I repeat, we call these angles as reference angles. Understood? We call these angles as reference angles. Okay? Reference angle. This is also a reference angle. Aryas, Faizan, Kanhaiya Karman, Kirti, Kushagra, Manvik, Prayagveer. Yes, sir. All of you understood or not? Yes, sir. Sir, Yes, sir, sir. a single doubt. Yeah. Yes, sir. या सर। Reference angles tell us about the upper quadrant or the quadrant under them. All of them.
No, like if I say that the reference angle is 90 degrees, what No. quadrant am I Ref referring to? no. Reference angle will always, there will be, you have to tell about two reference angles to denote a quadrant. If you say first quadrant, then you should always say that it is between 0 and 90 degrees. Only one reference angle cannot signify a quadrant. Understood? Quadrant. Got it, sir. Okay. ठीक है? Anybody is having any doubt in this, please ask. No doubts? Okay. So these are the reference angles, right? Now, there are some, we call them as standard angles. I am naming them as standard angles. Why standard angles? Because they are widely used angles, right? You will be using it frequently. To start with trigonometry, you will use it very frequently. So we call them as standard angles. Every quadrant has their own standard angle, right? So first quadrant has the standard angles of first quadrant are 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees. किसी किताब में लिखा स्टैंडर्ड एंगल है? नहीं. ठीक है. Why we are calling it? Because we will be using it very frequently in trigonometry when we start with it. आगे तो बहुत कुछ करेंगे, but अभी के लिए we use these angles only, right? 30, 45 and 60 degrees. Okay. So these are called as, the name which we are giving them is standard angles of first quadrant. Standard angles of first quadrant. समझ आ रहा है बच्चों सबको? All of you understood or not? Sir, can you Sir, I repeat have it? a doubt, Manu. हाँ बोलो भाई बोलो. Sir, what is the difference between reference angle and standard angle? Reference angle is mark the start and end of a quadrant. Standard angle is in between these two standard angles. Sorry, Thank you, reference sir. angle, right? Sir, is 100 degree also standard angle? Sorry. If is 75 degree also standard angle? Here देखो, it can be made from two standard angles, right? 30 plus 45. I am not calling them. See, this is not a standard name nomenclature which everybody follows. We are calling it because they are frequently used and we will learn from here onwards. Right. So to make things easier, to make things discrete for us, I am using it. You can call 75 degrees standard angle if you want to, if you want to name it like that. But I am not calling it because I have to focus on 3 from each quadrant. And because 75 can be made from 30 and 45, that's why I'm saying I am not counting it as standard angle. Okay. There is uniqueness in these 3 angles. Right? They are neither the sum of any of these 3 nor the difference of any of these 3, right? Any of the 2. I hope I have answered, Karman. So, how to find? Yeah. Want to ask? No, sir. Okay. To find the standard angles. Now, every quadrant has a standard angle. Yes, or should have a standard angle. If quadrant 1 has, then 2, 3, and 4 should also have. So, to find the standard angles of second, third, and fourth quadrant, to find the standard angles of second, third, and fourth quadrant, first method is add the standard angles, please pay attention, of the first quadrant to the smaller reference angle of the respective quadrant. Right? So let's try to figure it out. So my question is, what I want to do is I want to find standard angles of second quadrant. So which are the reference angles for second quadrant? All of you. Which are the reference angles for second quadrant?
90 and 80. And 90, 90 and 180. 180, right? Which one of them is the smaller one? 90 degree. 90 90 degrees. 180. 90 Very degree. 90 degrees, right? So to this 90 degree, what we do is we add the standard angles of first quadrant. So that is 30, then 45, then 60, right? This is 120, this is 135, and this is 150 degrees. Okay. So 120, 135, and 150 degrees are standard angles of second quadrant. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. प्रोसेस समझ आया ना बेटा? अब इसमें एक और मेथड है, ठीक है? और you can use this method, subtract the standard angles of the first quadrant from the larger reference angle of the respective quadrant. आइए करते हैं इसको, ठीक है? Just pay attention. So what do we do here? We subtract the standard angles from the larger reference angle. So for second quadrant, 180 degree is the larger reference angle. So from 180 degree, if we subtract 60 degrees, we get 120. If we subtract 45 from it, we get 135. And if we subtract 30 degrees, we get 150 degrees. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. So this is how Sir, we could get you the repeat it? standard Yes. angles. Yeah. If you read the rules, it is first one is to add the standard angles of the first quadrant to the smaller reference angle of the respective quadrant. So our objective was to find the standard angles of second quadrant. ठीक है? So first of all, what we do is we identify the reference angles. So 90 and 180 degrees are the reference angles of second quadrant. Now we find which one of these two is smaller. So 90 degrees is smaller. So to this smaller reference angle, we add the standard angles of first quadrant, 30, 45, and 60. I hope this is clear to all of you. Yes or no? कुशाग्र Yes, सिसोदिया sir. जी, Yes, sir. ठीक है? कुशाग्र, समझ आ रहा है बेटा तुमको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, very good. Then there is another method. If we subtract the standard angles of first quadrant from the larger reference angle, which is 180 degrees. So in this case, it is 180 minus 60, 180 minus 45, and 180 minus 30. We will get the same standard angles as we got while adding these to 90 degrees. Right? I hope all of you understood this. Any doubts here? Please ask if you have doubts. So if you don't have any doubts, now, first of all, don't write this. I'm giving you an exercise to do. Find the standard angles of third and fourth quadrant using the above method. You first give me the answer in the chat. Send it personally to me, right? So find the standard angles of the third and the fourth quadrants. ठीक है? Using the above rules. Please send the answer in the comment window. And while I check your answers, you can make notes. Okay? Please do it quickly. कीर्ति, करमन, कन्हैया लाल डांगी जी, फैजान, कुशाग्र, मानविक, प्रयागवीर. Understood, beta?
Anybody is having any doubt, please ask. Arnav Jha, Aryash Tiwari, Sumanyu. No, sir. Okay, good. Very good, Karman. You got it correct. Very good, Prayagveer. For fourth quadrant also. For fourth quadrant also. Few of you have got it for the third quadrant. I am waiting for fourth quadrant. Kirti, Kushag, I am waiting for your answers. Satvik, your answers. Very good, Faizan. Your answers are correct. Satvik, your answers. ये ठीक है. Very good, Karman. आर्यस सेकंड, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है बेटा, ये चेक करो इसको ठीक से. इज दिस द थर्ड क्वाड्रेंट, आर्यस? Sir, I have a doubt. हम्म. Sir, in fourth quadrant, we will take the largest reference angle as 360 degree. यस, यस. Please make notes. Please make notes. And once you are done making notes, please type done in the comment. Okay. Okay. So I hope all of you have done it. All of you got it correct. I can see this. Very good, Kirti. Aryash, you checked it. Why it was not? Yeah. Aryash, Yes, this sir. is not third quadrant नहीं है बेटा, ये चेक किया तुमने कि नहीं किया? ये चेक करो.
It's not third quadrant. You are not following. You please follow the rules ना. Yes, I'm For recent. रीसेंड कर रहे हो ना. हाँ, समझ आई ना बेटा गलती क्या है. शाबाश. ठीक है. सो प्रयाग वीर डन सर. नोटेड. नोटेड द कर्मन का हो गया. कुशाग्र डन. ओ वेरी गुड कुशाग्र, यू गॉट इट करेक्ट. शाबाश. देखो अभी समझ नहीं आ रहा था, अब तुम सब सही करने लग गए हो. ओके नोटेड ऑल ऑफ थैंक यू. यू सर। वेरी गुड वेरी गुड. थोड़ा थोड़ा सीखना है बेटा बस. थर्ड क्वाड्रेंट मिस्टर मानविक सिंह. थैंक यू सर। These angles don't lie in third quadrant beta. Manvik, Yes, sir. these quadrants, they don't, these angles 150, 135 and 120, they don't lie in third quadrant. They lie in Yes, sir. second quadrant only, na? The third quadrant kahan hai, Manvik? Which are the reference angles for third quadrant beta? Manvik? 180 to 270. 180 and 270, right? So which one of them is a smaller reference angle, Manvik? 180. 180. So to 180, we will add the angles, right? 60, 45 and 30 degrees. Got it? Yes, sir. And to the from the higher one, from the larger one, that is 270, we will subtract these angles. Okay, sir. So if we want to find the standard angles of third quadrant, we add the standard angles. I'll just draw it for all of you. We add the standard angles of first quadrant to the smaller one, right? And subtract these standard angles from the larger. आर्यश So, समझ yes, आया? yes, गलती I, समझ आई? क्या गड़बड़ है? yes, अगर so, इसमें you- ऐड करोगे, अगर if you add these in this angle, you will get a fourth quadrant angle. okay. So we use the standard angles of the first quadrant as the base. Yes, These yes, angles. yes. Oh, okay. Okay, so ठीक है, वेरी गुड. समझ आना जरूरी है. फिर देर से आए पहले आए उससे कोई मतलब नहीं. So 180 Sir plus Sumanyu, I 30. have a doubt. हाँ पूछो पूछो सुमन. Sir, we will only use first quadrant angles Yes, to find other quadrant. yes. कोई रूल फॉलो करना है तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, कहीं फिक्स करना पड़ेगा ना. Yes, sir. So this is 210, this is 225, this is 240. ठीक है. And we have, this is 270 minus 60, 270 minus 45. ये सब इंपॉर्टेंट है. देखो तुम्हें लगेगा अरे तो प्लस माइनस ही करना है, बट वाई दिस एक्सरसाइज इज नेसेसरी इज, एक बार सीख लोगे कभी दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. You need not have to look twice. Okay. So the last one I am not, okay, I'll give you the working also. 270 plus 30, 270 plus 45, then 270 plus 60. So we have 300, we have 315 degrees, we have 330 degrees. This is also, you will get it from 360 minus 60, 360 minus 45, and 360 minus 30 degrees. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. yes. Yes. Okay. अब एक ही. चलो. So after this, मानविक समझ आया बेटा? Yes, sir. अब समझ आ गया तुमको. शाबाश. So now let's move ahead to some new properties of new attributes of quadrants. एक समझ में आया तो then all of you will be able to understand others also. So let's draw the quadrants again. Please pay attention, all of you. Okay. See, this is what I'm making you aware about trigonometry. What is it? Abhi there will be again some more lectures in it. So this is 0 degrees. Okay. This is 0 degrees. This is 90. This is 180. This is
270 and this is 360. Okay. Now, every quadrant has a unique property on trigonometric values. So what are trigonometric values? I'll write it here. Please pay attention. Don't write, pay attention. Trigonometric values are I'm talking about only sine, cos, and tan. I am discussing only sine, cos, and tan, right? So trigonometric values are the values of sine, cos, and tan of the angles of the triangle, right? I am interested only in these three trigonometric functions, sine, cos, and tan, right? So the property is like this. Trigonometric values of all the angles are positive in the first quadrant. So what do I mean by this? Sine of all the angles between 0 and 90 degrees, cos of all the angles between 0 and 90 degrees, and tan of all the angles between 0 and 90 degrees is same. Sorry, is positive. Not same, is positive. Okay. So for example, if I ask you, please pay attention. If I ask you what is the nature of sine of 45 degree, positive or negative, what will you say? Is it positive or negative? Positive. Sir, It is positive, right? Positive. Cos of 60 degrees, positive or negative? Positive. Positive. Very good. Tan of say 38 degrees, positive or negative? Positive. 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 So you understood this, right? Then comes the next part of in second quadrant, only sine of all the angles is positive in the second quadrant. Okay. Only sine of all the angles is positive in the second quadrant. That means cos and tan are negative in it. Okay. For example, I'll give you some examples. Don't worry. Sine of 150 degrees. Positive or negative? Positive. Sine It is positive. positive. Very good. Because Sir, sine is positive. positive in second quadrant. Right? What about cos of 130 degrees? Positive or negative? Negative. Negative. Very good. Very good. I hope all of you understood this. पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ रहा है बेटा सबको? हाँ ना बोलेंगे वही सब लोग. कीर्ति, Yes, अंडरस्टूड? sir. Yes, sir. सर Yes, यस. सर ये सेकंड वाला फिर से बता दीजिए एक बार. आप हैं कुशाग्र सिसोदिया, ठीक बोल रहा हूं मैं? यस सर. हाँ. तो सिसोदिया जी एक बात बताइए, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए. ओनली साइन ऑफ ऑल द एंगल्स इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? यस सर. तो सिर्फ साइन की जो वैल्यू होगी किन एंगल्स की? जो 90 से 180 के बीच में होंगे उनकी यस सर. वैल्यू पॉजिटिव होगी. यस तो सर. साइन 150 पॉजिटिव हो गया. साइन अगर आप कहेंगे साइन 130 डिग्री क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? तो पॉजिटिव होगा. यस और नो? पॉजिटिव. पर कॉस 130 क्या होगा बेटा? सर नेगेटिव. शाबाश, आ गया तुमको समझ में? यस सर. अब थैंक यू बताओ, सर. आसान था ना? ठीक है, वेरी Yes, गुड, sir. थैंक यू सो मच. सो नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan of all the angles is positive in the third quadrant, right? That means sine and cos are negative in it. Okay? Sine and cos are negative in it. Now you guys can understand what is it. So I'm not explaining it. I'm not giving you any examples in that.
We will do some exercise, so don't worry. Only cos for fourth quadrant, only cos of all the angles are, is positive in the fourth quadrant. That means sine and tan are negative. Okay? All of you understood this? These three conditions? Yes, Four sir. conditions, sorry. Yes. Okay, now I have Yes. a question for all of you. Okay? Please pay attention and you have to mention it, right? So, in this same sequence only, you have to answer. Sine of 178. Don't write, don't prompt it here. You have to write it in the comment window. Okay? Sine 178, cos 330. Third is tan 240. Fourth is sine 54 degrees. Then sine of 310 degrees. Sixth is cos of 240 degrees. Not 240, 210 degrees. So please type in the same sequence in the comment window the nature of these values. Right? The way I have written here in the examples, you have to mention the nature of values. Please type it in the comment window. And chat. Sorry? In chat. Of course, yes, in chat. So the nature of these values in all four quadrants or just one? See, obviously they are in different quadrants now. Yes. For example, sine 150 is in second quadrant. So you will write nature of sine 150 degree according to the quadrant, respective quadrant beta. ठीक है? Okay. You are Kirti, right? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? So I'm Arish. अमर आर्यश तिवारी. आर्यश जी समझ आया आपको कि नहीं आया? Yes, sir. Okay, please do it. All of you, please write. फैजान, your answers. अच्छा हाँ, दिया तुमने, देखा मैंने. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. Very good, Faizan. All your answers are correct. Shabash. Kirti, check first one, beta. Check the first one. Rest are, you have not written sixth, but check the first one, okay? So can you please explain what is to be done? I'm not getting it. You are, I'm Arish again, sir. okay, Aryash. Okay, Aryash, pay attention, okay? Sine 150 degrees. Aryan, this angle lies in which quadrant? 150? Second. Second. In second quadrant, value of sine of any angle is positive. Yes or no? Yes, sir. So I wrote positive here. Okay. So this is what you have to do. Check the angle with in which Okay. quadrant the angle lies, right? And then check the function which is associated with it. So in second quadrant, 130 is associated with cos, Okay. right, Aryash? So cos will be negative or positive in second quadrant? Negative. Negative. So negative. So if I ask you, say let's do one more. Cos of 345 degrees. Aryash, how will you Yeah. go ahead with this? Tell me the first step. What will you check? The angle. This angle Yeah. lies in which quadrant, Aryash? Second. Check, No, check, sorry, check. sir. Fourth angle. फोर्थ में Fourth. आएगा ना. तो फोर्थ में cos is positive और negative? Okay, sir. Okay. नहीं Got it. ओके नहीं, बताना है cos positive है कि negative है. Either cos is positive. Cos is positive. Very good. So write positive. Simple. Okay.
If I ask you what is tan 330 degrees, what will you say? It is This in the angle second, lies in which quadrant? अरे नहीं, फिर से. fourth quadrant. तो हाँ, tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में? Negative. तो नेगेटिव. समझा बेटा? Yes, sir. ऐसे करना. तो अब ये कर लोगे तुम, करके दिखाओ. Yes. All of you please do it. देखो, these are small. This seems to be small, right? But believe me, this will very good, Karman. Your answers are correct. Manvik, check the first one, beta. First one. Check the first one. Rest all are नहीं. First one and fourth one. Manvik, first and fourth. ठीक है? हाँ, चेक करो, शाबाश. And Prayagveer, pause. Prayagveer, last one. Sixth. चेक कर बेटे. ठीक है? फैजान का क्या है? हाँ, फैजान ने तो लिखा. ठीक है? And please make notes. If you are done with this, please make notes. Okay? Kirti, where is your answer? Excuse me, Okay, sir. you have given. Kirti, your first and last one. हाँ, Excuse me, sir. कुशाग्र जी बोलिए. सर, हमारा ये कमेंट बॉक्स सर आ नहीं रहा, तो सर हम ऐसे बता दें. बता दें, बताइए. सर sin 178 सर हाँ. पॉजिटिव. अच्छा, cos आपको बताना पड़े. एक सेकंड, हाँ बा. 178 साइन 178 पॉजिटिव क्यों है? आप हमको समझाइए पहले. सर क्योंकि ये सर क्या कहते हैं, ये सर क्वाड्रेंट में आ रहा है सर. कौन से सर क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड सेकंड में आ रहा है. शाबाश. तो 178 is in second quadrant. Then सर सेकंड cos 330. अरे सर रुको ये बाबू, रुको बच्चे, रुको. साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? सर पॉजिटिव. तो इसीलिए पॉजिटिव बोला ना तुमने इसको. यस सर. शाबाश. अब इसको बताओ. सर ऑल ऑफ यू ये प्लीज लिसन टू दिस डिस्कशन. ओके. हाँ. सर ये ये भी हमारा पॉजिटिव है. ओके, क्यों है पॉजिटिव? सर बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है. शाबाश. और सर ओके, इसमें ये कॉज है, तो सर इसमें कॉज जो है वो पॉजिटिव में है. वेरी गुड. शाबाश. इसका क्या? और और सर 10 to 40 जो है वो भी पॉजिटिव में है. वेरी गुड. क्यों? सर क्योंकि ये हमारा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में. वेरी गुड. और सर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो हमारा पॉजिटिव है. ओके, वेरी गुड. ठीक है. और सर ये इसका क्या करेंगे? सर ये हमारा पॉजिटिव है ये भी. ओके. वाई? सर क्योंकि इसमें जो साइन है सर वो क्या कहते हैं वो है. क्या है? सर इसमें पॉजिटिव है ना सर. सर हाँ, सारे शाबाश. में फर्स्ट वाले में सारे वेरी पॉजिटिव है. गुड, वेरी गुड. चलो आगे बढ़े. इसमें क्या है और सर? सर 310 में सर ये माइनस, सर मतलब नेगेटिव. वेरी गुड. और इसका क्या? सर ये 210 सर ये भी नेगेटिव है. सर क्यों? क्योंकि सर ये जो फोर्थ सिक्स्थ वाला है लास्ट वाला, हाँ सर ये हाँ. हमारा क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. और सर सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड 210 सेकंड क्वाड्रेंट में है. सॉरी सर फिर? थर्ड में. और सर हाँ, ये हमारा इसमें कॉस सर नेगेटिव में है. शाबाश. देखो तुमको आने लगा. तुम झूठ मूठ कह रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा है. तुम तभी उसके उस वाले में भी पूछ लेते, तुम डाउट तो हो जाता ना तुम्हारा. ठीक सब. यस सर. कीर्ति, वेरी गुड. योर आंसर्स आर करेक्ट बेटा. शाबाश. मानविक, करेक्टेड. थैंक यू सर. शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. आर्यश, डन. आर्यश, फिफ्थ वन. चेक द फिफ्थ वन. Okay. चलिए. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं अभी तक? ओके. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. कैन आई टेक योर another 5 to 10 minutes if you agree to this? यस सर. श्योर Huh? सर. Please. श्योर सर. Can I take you few more minutes? I want to teach you some standard Yes, sir. triangles and then we are Yes, done with sir. this session. Okay, यस सर. good. श्योर सर. Good. चलो शाबाश. तो we have, as we have standard angles,
we have some standard triangles also. And why I'm denoting them by standard triangles, because they will give you the values of the trigonometric values of the standard angles of first quadrants. They will give you, these standard triangles will give you the trigonometric values of the standard angles of first quadrant. That's why I'm calling them as standard triangles, right? This you have to memorize. इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है बेटा, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? The triangle are, there are, technically there are two, but I'll teach you three, ठीक है? Because that third one is another frequently used triangle. And this last one कर लेते हैं, इसको भी क्या दिक्कत है? So this is the first triangle. Just pay attention. Huh? This is the first one, second one, and the third. This triangle is having an angle of 45 and 45 degrees. ठीक है? So this is an isosceles right angle triangle. This is 90. The sides are 1. Just pay attention. 1, 1 and √2. अरे कुशाग्र सिसोदिया, तुमको पता है क्या पाइथागोरस थ्योरम? कुशाग्र, यू नो पाइथागोरस थ्योरम? हेलो। हाँ बोलो बोलो, यस सुन सर। रहा हूँ। यस सर। शाबाश। तो फिर तो तुमको ये समझ में आ जाएगा. So this is 30, this is 60, and this is 90 again. So can you guys see that in the first two triangles, all the standard angles of first quadrant are covered, right? So here the angles are this 30, 60, 45, 45, 1, 1, √2, and in this opposite to 30, it's 1. The longest side is 2, and this is √3 using Pythagoras theorem, right? Anyone who does not know about Pythagoras theorem, please ask. I'll explain. Now the last one is, it's not a standard, these are not standard angles, but this triangle has a unique feature. In this triangle has, in integral values, this triangle is representing the smallest Pythagorean triplets in integral values without positive integers. So this triangle is representing the smallest Pythagorean triplet, 3, 4, 5. ठीक है? The angle between 5 and 3, is 53 degrees. So this will be 37 degrees, right? The angle between 5 and 3 is 53 degrees. So this is the uniqueness of this triangle. That's why I have kept it in standard triangles. And these angles are also very frequently used, right? So now all of you have to answer these values. Sin 45, एक मिनट, इसको लाइन से चलते हैं. Please answer it so that I can check whether you have understood today's session or not. The first slide of today's session. Sin 30, cos 30. Third, sin 45, because I know cos का value क्या होता है, so I'm not interested. Sorry, tan is ratio of these two, so I'm not interested in tan. Fifth one is sin 60, cos 60. All of you fill in the values by looking at the triangles, by following the relation of the first slide, which we learned. Sin 37 degrees, cos 37 degrees. Okay, and the last one is sin 53 and cos 53. All of you do this quickly. करिए. Very good, Prayagveer. I check your answers. हाँ, शाबाश. बेटा ये 60, 65 is, why are you writing 60, 45, 30, Prayagveer? You have to write the values now by looking at the angles. एक सेकंड.
I'll write it here. Just pay attention. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Now you should be able to figure it out. Very good, Karthik. I thought you left. Karthik, you are there from the beginning or what? Sir, I am also preparing for IUCAM. Okay, so you know these values. You were there from the beginning or not? No, sir. अच्छा, अच्छा, ठीक. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, यस. सर ये वैल्यू अभी मुझसे निकल नहीं रही सर, बता क्यों नहीं दीजिए. निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी बताओ तुम. साइन थीटा तुम समझते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तुमको पता है कि नहीं परपेंडिकुलर क्या यस हो? सर. ये बताओ. यस. परपेंडिकुलर मालूम है ना तुमको? यस सर. अच्छा, इधर आओ. All of you, those of you who are not able to understand, please, or who are not able to find, please pay attention. Aryash, are you there? Yeah. Aryash, you are able to understand what I have asked in these questions? Yes, sir. Okay, good. Vaguely. Okay. हाँ, क्या नाम है इसका? कुशाग्र. यस सर. Side opposite to theta is perpendicular, right? यस सर. This is base and this is hypotenuse. Clear है ये बेटा आपको? यस सर. अब एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है? लिखा है ना उधर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ या ना? यस सर. अब इधर बताओ, साइन 45 मेरे को साइन 30 निकालना है. साइन 30 कहाँ है? ये है 30 डिग्री का एंगल. ठीक यस है. सर. तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा बेटा इसका? सर ये सर ये 1. वाला साइड. हाँ, 1 होगा ना. तो इसकी वैल्यू लिखो 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? सर 2. खत्म. ये नहीं लिख सकता तू? ओके सर. थैंक यू सर. फिर इतना थैंक आसान है बेटा ये. तुम अपने आप को कमजोर मत समझो. तुम छोटा बच्चा, इसलिए मैंने सबसे पहले पूछा. छोटा बच्चा ज्यादा तेज होता है. करो. ओके सर. सर आप NSCP के लिए पढ़ाओगे? कौन हो तुम? कौन हो बताओ? सर कार्तिक. कार्तिक. यस सर. कार्तिक, तुम कौन सी क्लास में हो? 9th में. और तुमको क्या आता है? तुम क्लास के बाद मिलो मुझे. रुको, ओके तुमसे सर. बात करते हैं. तुमको क्या आता है फिर डिसाइड करते हैं. तुमको पढ़ाएंगे अभी. ठीक है. कब देना चाहते हो तुम NSCP? Anyway, please type your answers quickly. It's चलो, बहुत सारे आंसर्स आ गए. बहुत वेरी गुड. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. मानविक, आर्यश, योर आंसर्स. प्रयाग, वीर, योर आंसर्स. कीर्ति, आंसर्स बेटा. फैजान, गुड. You got it correct. Yes. 30 is 1/2. Very good. Sine is 1/2. ठीक है. शाबाश. हम्म.
Take your time, take 4 more minutes. We have already, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग सब नींद आ रही होगी सबको, बट 4 मिनट और है, करो जल्दी से. No, all the triangles, bhai. There are triangles B, C also, na. See, these angles will lie in all the triangles. Shivam Dangi, if I'm not wrong, this is your name? कर्बनी क्या लिख रहा है बेटा तू? 1/√3 कहाँ से आया? कर्मन, तुमने कुछ गड़बड़ की है, चेक करो एक बार. Aryash, now you are getting it correct. Very good. 1/2 है ना? हाँ, तुम कहाँ पढ़, क्या किया तुमने? मैंने वेरी गुड. हाइट को मैंने √3 कर दिया. हाँ, मैं देख रहा था वो कुछ गड़बड़ हुई तुमसे. कोई बात नहीं, ठीक कर ले बेटा. वेरी गुड मानविक, वेरी गुड. कीर्ति, वेटिंग फॉर योर आंसर्स बेटा. 2 more minutes to go and then I'll give you answers, okay? कुशाग्र, क्या हुआ तुम्हारा? कन्हैया लाल डांगी जी, आपका नाम अगर सही है तो आप प्लीज आंसर करिए. यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. सर कर रहे हैं सर. तो जल्दी करिए ना, तुम तेज बच्चा है एकदम, फटाफट करो. ठीक है. रूटीन पेट्रोलिंग पर. Sir, can you explain it once more? I'm getting confused. You are. I'm getting confused. You are. What's your name? Yes, sir. Kirti. Yes. Okay, Kirti, pay attention. Kirti, you understood this, how to go ahead with this angle and perpendicular and height and, sorry, hypotenuse and base. You understood this or not? Yes, sir. Okay. Now, Kirti, if I want to find, say, sine 45 degrees, okay? Take any one of these two 45-degree angles. So let's take this angle 45 degrees. So, Kirti, which side will be perpendicular for this 45-degree angle? Um, Which sir, side the is the side which is 1, right? This one. yes, I'll name the sides A, B, and C. Okay. So BC is perpendicular for this 45. Yes or no, Kirti? yes, sir. And hypotenuse is this.
So name it like this. Okay, and this is base. Okay. So sine 45 will be what, Kirti? It is given as perpendicular upon hypotenuse. So how is it given here? Sir, one What is and one. perpendicular? 1 upon? One. No. Hypotenuse. What is Oh, sorry, hypotenuse? root 2. Root 2. Done. Okay. What about this cos 45? It's base upon hypotenuse. What is base? Value of base here, Kirti? 1. 1. Divided by Root hypotenuse? 2. Root 2. Sine 60. What about 60? This is 60. Which side will be perpendicular for it, Kirti? This is A, B, and C. Which side Sir, is perpendicular? BC. No, for 60 degrees. AC. For 60 degrees. A side opposite to angle is perpendicular. Repeat with me. Side which is opposite to angle is perpendicular. Got it? Yes, sir. So here which side is perpendicular for 60 degrees? AB. AB, yes, AB. So this is perpendicular, right? For 60 degrees. This is base and this is hypotenuse for 60 degrees, right? Yes, sir. Then what is sine 60? Sine, root 3 upon 2. Shabash. What is cos 60? 1 upon root 3, 1 upon 2. Done. Got it? Yes, sir. Now, for 30 degrees, you have to change it. For 30 degrees, it will be changed. Okay? It will change. Which side will be perpendicular for 30 degrees? This side will be perpendicular. Base will be this side. Yes or no? Yes, sir. So cos 30 will be root 3 by 2. Got it? Yes, sir. So now 37 degrees. Tell me, Kirti, which side will be perpendicular for 37? If I don't mark here, which side will be perpendicular for 37 degrees? Sir, AB. 3. Yes. 3. So this is 3 by 5 and 4 by 5. 53 is 4 by 5 and 3 by 5. Okay. Yes, sir. Thank you. I hope all of you understood this. Anybody is having any queries or any confusion, please ask. Aryash, I hope you got it correct. Very good. Shabash. Anybody, sir, I am not able to speak. Kanhaiya Lalji, why you are not able to speak? Okay, no worries. Whatever challenge you have, please take care. So we have Karman. Karman done, beta? All correct? यस सर कर लिया सारा ठीक मैंने Okay. वो एच और पी को कंफ्यूज कर लिया था ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक करना है आपको, है ना? So kids, I am stopping here for today's session because we are already very late. So if you can switch on your cameras, let's start with Aryash. Aryash, so a quick feedback, right? How was the session, Aryash? Yes, sir, it was interesting. You understood trigonometry or not? Yes, I did. It's If new we to go me. by this pace, if we learn it by this pace, will you be able to cope up with the sessions? Yes, surely. Sure. You are able Yes. to solve the questions in today's session? Absolutely, yes. And your doubts were cleared or not? Yes, yes. Okay, very good. Yes, Mr. Manvik Singh. How was the session for you? The session was actually great and it helped me understand trigonometry a lot actually because I tried it earlier but I couldn't understand it. But you followed certain rules and you're able to get through it, right? Yes, sir. Good, good. You understood? Yes, sir. Badhiya. Kirti, how was the session? Sir, I clearly understood the concepts. Whenever I used to look at like 10th grade textbook, I used to get very worried. But then now I feel it's easy. Now frame it in front of you. Get it framed in front of, keep it in your table. You'll not be afraid of it. Yes, sir. Okay, it will not scare you. Karman, I think nothing was new for you, but yes. No, sir, you gave me a wider view on the topic. Like the definitions you gave in the starting and the quadrant explanation, it gave me a wider view to the topic. Wow, great. So, ठीक है, there was something for you to learn. Don't worry, I'll send you. You can. Acha, first of all, this is my number.
If you want to connect with me, you can connect with me. Actually, I would have given you some homework I usually give, but today I didn't have that scope of giving the homework. So I'm leaving it to you. So Devendra Chandrakar, this is my number, 957-437-5555. Right? Make a trigonometric table of all the angles and send it to me. You can take this as your homework. नहीं ठीक है फालतू काम तो मत करो इसे Okay, sir. जबरदस्ती. If you can do it, but you already know the values. So this is my number. Okay, sir. And right. And yes, we have और कौन बचा? आर्यश से हुआ, कुशाग्र, फैजान, what about you? तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा. हाँ बोलो, फिर भी बोलो. Sir, the session was nice and I understood all the concepts clearly. Good. Your doubts were cleared, but you have responded very well. Thank you, sir. You understood. Good. कार्तिक तो मैथ्स की तैयारी कर रहा है. कार्तिक, it was, and you were not there for the full session also, I think. No worries. Yes, sir. है ना? ठीक है. But Karthik, this is maths for physics only, right? So you might Yes, not sir. find great value in it, but yes, we need this maths for physics. So physics will be different thing for you. You have learned calculus while you are preparing for that exam? Yes, sir. मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है. पढ़ा हुआ है. शाबाश, शाबाश. तो तुमको दिक्कत नहीं होगी. You can directly Yes. join for physics. Ma'am, a quick feedback from you if possible. Yes, sir. It was a very nice class. I could understand so and much. solve most of the questions. So, can I get a recording for this session? Yeah, I'll definitely send, ma'am. If you have shared your number, we will send you the recording as well as the feedback of today's session also. But And since sir- the student was not there, so I'll not send you the feedback of you have to give the feedback. So no Yes, worries. sir, it's excellent. The class was excellent. And sir, Thank you so much. the maths and physics will be differently taught. I mean, what is the methodology? I'll explain. Ma'am, what happens is to learn physics, we have to go for we Maths. have to learn maths first. So Mhm. first 45 days, that is 1.5 months, I go for physics. I go for maths only. Mhm. I do trigonometry with them, I do vectors, and I do calculus. These three topics I teach them. Because without calculus, without vectors, without trigonometry, it is impossible to move ahead in physics. The way I want to move, the way I want to teach these kids I want them to prepare for IIT or NEET or do that kind of stuff, right? That kind of level of questions. So it will be very difficult for me. They will take some time. See, kids like we have a 7th grade kid today. So they will take some time. But yes, I can vouch for this that if given time, if we are patient with them, they learn. Mhm. The learning curve can be different for these kids, but they learn. तो वो उतना टाइम सबको मिलता है. If they are not able to cope up, we actually keep some one-on-one sessions for them. Then there are revision sessions. So multiple times ये basic maths चलता रहेगा. Right. And after 45 days, 45, 50 days, plus minus 1 week, we take that. We start with physics. Okay. So the very first chapter in physics is very easy, units and dimensions. And at least 2 to 3 questions are asked from that chapter in NEET and in JEE mains also. So these kids, they will be able to solve that kind of question from that chapter. So then physics comes and we do first 6 chapters of physics till work, energy and power from a book we follow a book that is Concepts of Physics H.C. Verma by Dr. H.C. Verma. It's a wonderful book and it is an apt book for preparing physics for any of these exams. Now, for younger kids, your son is in which standard? Ninth. Ninth. So for him, there is no milestone as of now to achieve because NAC-JS is gone because it will be in the month of November, so he will not be able to. Just a second, ma'am. Kids, if you want to leave, please leave for the session. Thank you. So I'll just thank you all, right? And ma'am, we can discuss it after the session. I'll just Yes, thank sir. them. So kids, you can go and thank you so much for attending the session. I'm really happy and I was really enthusiastic while teaching all of you. And you kids participated very nicely. My best wishes to all of you. We will send you the feedback in your parents' number.
My best wishes to all of you for whatever future endeavors you take or whatever future endeavors you want to pursue, right? Do well, be happy, and whatever you do, be happy in doing that, right? Sir, And the do it with session full was energy. excellent. Thank you so much, Kushag. तुम्हारा फीडबैक नहीं लिया क्या मैंने? No, sir. I am sorry, Kushag. How was that session for you? Sir, the session was excellent and I understand these things. तो नहीं, तुम एक चीज सीखे आज. क्या सीखे बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा तुमने आज. क्या सीखा बताओ? Sir, trigonometry. बात ट्रिग्नोमेट्री तो सबने सीखा. तुमने क्या सीखा नया बताओ? तुमने कुछ नया सीखा है आज. सबसे सर इंपॉर्टेंट सर trigonometry में वो एंगल निकालना सर. तुमने सीखा है आज कि जब सवाल ना बने तो पूछना है. ओके सर. समझ आया? यस सर. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस समय नहीं समझ में आता है, टीचर पूछ रहे हैं अगर कि मुझे समझ नहीं है, नहीं समझ आया है तो पूछो, तो पूछो. और अगर टीचर नहीं पूछ रहे हैं तो यू हैव टू आस्क पोलाइटली. पूछो, सर मेरे को ओके प्लीज दोबारा समझा देंगे? बस. ओके सर. ये जो है ना, ये मैजिक वर्ड है, प्लीज. काम करता ओके है. ठीक है? थैंक यू सर. ओके, बाय, गुड नाइट. थैंक यू सो मच, बाय Karman. सर. बाय सर. Guys, गुड नाइट सर. good night, beta. Kids, you can leave the session and we can. Yes, ma'am. So I was there. Then we go for these first 6 chapters of physics of from 11th standard level till 11th standard level, I should say. We start from very basics because a 7th grade kid is there and 8th grader is there. So I know that these kids, they are not aware of anything about whatever I will be teaching them in physics. So I take it like that. फिर वहां से हम शुरू करते हैं till the extent they are able to solve questions of concepts of physics HC1. That is the limit for this particular course. So the course continues till 1 year. 1 year. The duration of the course is 1 year. But if the kid wants to repeat it, the same syllabus, we allow them to repeat it next year also in live session. तो वो उसके लिए कोई, and we don't ask for different fee also. The fee which you have paid in this particular year, you have actually not paid it for a course of duration of 1 year. It's for the syllabus which you have paid. तो 7th 8th 9th 10th तक तो ये फाउंडेशन में आएंगे. बट जैसे अभी कर्मन है, मैं इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको पहले से पढ़ रखा है. तो ही इज अ चाइल्ड हु विल पिक क्विकली. तो I will suggest his father or his parents to next year, if he wants to repeat, he should repeat it in a higher batch, let's say for 11th standard batch. तो उनके साथ ही repeat. I do it for any kid whose grasping is very good and who want to move fast. तो बस छोटे बच्चे हैं 7th 8th वाले, उनको मैं नहीं करता हूँ. उनको बोलता हूँ कि आप फाउंडेशन में रिपीट करो, बिकॉज टिल 9th थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगता है. बट 10th वगैरह में आने के बाद मैम ये बहुत तेज हो जाता है. मतलब ऑलरेडी वो उतनी बार कर चुके हैं. तो दैट इज, एंड द कोर्स विच वी आर डूइंग इज 6 month syllabus of 11th standard, close to 6 months. So when they enter into 11th standard with this foundation, so they are already way ahead of their peer group, number one. Now if they want to move ahead with me only, right, say for example a kid of 8th standard, he has completed his portion of foundation. Next year if he wants, he can come in my upgrade batch. That upgrade batch is for the remaining portion of 11th standard plus 12th standard. तो उसको करवाने में मुझे 12 से 15 महीने और लगते हैं. फिर तो 8th का बच्चा जो है, 8th का स्टैंडर्ड 8th स्टूडेंट जो है, वो 10th के कंप्लीट होने से पहले 11th का टॉप पूरा सेशन कर चुका है, 11th 12th. तो उसकी फिजिक्स तैयार हो गई. Yes. तो अब फिजिक्स तैयार हो गई है, सिर्फ तैयार नहीं हुई है, उसकी फिजिक्स जेई मेंस नीट लेवल की तैयार हो गई, जिसके वो एग्जाम की तैयारी कर. नाउ ही हैज 2.5 years टू रिवाइज दैट. और मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, मतलब क्योंकि मेहनत की है हम लोगों ने, तो इट्स अ रिजल्ट. तो वी डोंट लीव दिस किड्स, वेयर एवर दे गो दे कम बैक टू अस. मतलब वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एंड वी मेक देम डू हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, वी वांट प्रिपेयर देम फॉर रैंक. मतलब अब 80 से 100 जाना है. Yes. मतलब 60-70% हो गया है तुम्हारा. तुम्हें मार्क्स आने लगे जेई मेंस लेवल के एग्जाम में या एडवांस लेवल के एग्जाम में, यू आर स्कोरिंग 30-40% मार्क्स. तो नाउ यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू इंप्रूव अपॉन इट. तो मैम दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स, एंड दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस.
सर, तो और ये जो मैथ्स 1.5 month 45 days की मैथ्स है, विल इट हेल्प इन मैथ्स ऑल्सो? मैम देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो 7th वाले बच्चे को तो कोई हेल्प नहीं होगी इससे। मतलब उसके उसके क्लास के मैथ्स में तो कोई हेल्प नहीं है। 9th वाले बच्चों को भी कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि टॉपिक वो है ही नहीं। 10th वाले अच्छा। बच्चे को भी कोई बहुत हेल्प नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी उसको ट्रिग्नोमेट्री आती होती है, तो उसको भी कोई बहुत मदद नहीं है। तो और वेक्टर और कैलकुलस वो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, पर इनके कहीं काम का ही नहीं है, किसी स्टैंडर्ड में नहीं होगा। तो टेक्निकली मैं इनके Only ट्यूशंस के लिए physics. तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर फिजिक्स में इनको मदद मिलती है। फिजिक्स में जैसे क्या होता है, दे गेट अ पर्सपेक्टिव कि हाँ अच्छा है, मोशन जैसे फॉर एग्जांपल मोशन, वी दे गेट हाउ वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग मोशन। अच्छा। तो डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज 9th वाइन्थ के बच्चों को डायरेक्शन वायरेक्शन का सिग्निफिकेंस नहीं बताया जाता। हम्म। उनको इक्वेशंस ऑफ मोशन उस तरीके से डिराइव नहीं करवाए जाते हैं। हम कैलकुलस यूज करते हैं, वो ग्राफ यूज करते हैं। तो व्हेन वी गो लाइक दिस, तो इससे क्या होता है मैम कि जैसे इस बच्चे ने कहा ना कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलने लगता यस। है, राइट? सो दैट हेल्प्स देम वाइडन इट कि हाँ अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते। तो मैम क्या है ना, स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से दिस, बट schools में we have a syllabus which is every day they are stripping of something or the other from that portion. 11th 12th का सिलेबस तो एकदम कचरा कर दिया है। आई एम सॉरी टू से बट यस, ऐसा है। पर आप उसको पढ़ाओगे नहीं तो अच्छा, कंपटीशन में वो सब पूछ रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए? यस। दैट्स अच्छा। और सर, आईजीसीएसई और सीबीएसई में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा? ये आईजीसीएसई है इनका। मैम नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम है मैम। सेम इनफैक्ट कंसेप्ट। आईजीसीएसई वालों को इससे फायदा होगा। आईजीसीएसई का जो फिजिक्स है वो मोर अप्लाइड फिजिक्स, अच्छा। तो उन लोग को मैम ज्यादा बेटर होता है। एंड आई विल, पता नहीं मतलब आप कहाँ से हैं? सर, राजस्थान। राजस्थान में से प्रिसाइज अगर आप बताना चाहें। सर, जोधपुर। जोधपुर से हैं मैम। यस। मैं यहाँ मुंबई से हूँ, और मुंबई में आईजीसीएसई जितने भी आईबी बोर्ड हैं या आईजीसीएसई बोर्ड है इंटरनेशनल करिकुलम के, देर आर हार्डली एनी वेरी गुड फैकल्टी टीचिंग इन स्कूल लेवल करेक्ट। फॉर आईजी बोर्ड। और जो बुक्स हैं उसकी, दे आर फेबुलस बुक्स, वेरी गुड बुक्स। मतलब मैं वो बुक जब देखा मैंने, तो मैंने कहा अगर इसको कोई तमीज से पढ़ा दे तो इन बच्चों को जेन्युइनली स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती है। पर मेरे मेरे पास जिस साल भी आईबी बोर्ड का स्टूडेंट आया है, वो सिर्फ बेचारा, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा शौर्य गुहा, वो आईबी में था। वो बच्चा मेरे पास आया एडवांस प्लेसमेंट के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एपी के पेपर्स होते हैं यूएस के लिए। वो फाइनली वो कनाडा गया। वो जब उसको पता चला कि अच्छा ऐसे फिजिक्स पढ़ी जाती है, तो हिज स्कोर इन आईबी इम्प्रूव। उसका एपी में जिस पर्पज से वो आया था, 5 आउट ऑफ 5 इन मैकेनिक्स पेपर और 4 आउट ऑफ 5 इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पेपर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। मतलब वो मेरे पास सिर्फ 6 महीने पढ़ा होगा, पर सिर्फ कुछ नहीं है मैम, पढ़ाने का तरीका है। मैं यस। किसी टीचर को खराब नहीं बोल रहा हूँ, द ओनली थिंग इज आपको वो पैटर्न से पढ़ाना होता है कि भाई द पर्पज शुड बी मेट। आप हाँ सर, बिना किसी बेसिक से ऑब्जेक्टिव के पढ़ा लेके रहे हैं। और स्लोली ले जा रहे हैं। आप अभी आपने आज देखा ना, मतलब देखिए, अच्छा है कि पेरेंट, आप एज ए पेरेंट बैठी रही आज आप, एंड हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, राइट? देर आर किड्स हु आर इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू एनकरेज देम टू आस्क। यस सर। वो बच्चा नहीं पूछ रहा था पहले, वो तो उसने बड़ी हिम्मत करके मुझसे पहली बार बोला होगा कि समझ आया कि नहीं, बट उसके पिताजी बैठे हैं बाजू में, आई नो, पर वो फिर भी नहीं पूछ रहा। मैम ये सब ना, ये अगर शुरू से फंडामेंटल्स ठीक हो गए ना इनके, तो आप विश्वास करिए कि ये दे डू मैजिक। यस सर। यस सर। आई नो सर, 9th इज बेसिक क्लास, लेकिन फंडामेंटल्स क्लियर होना जरूरी है। यस यस यस। और सर, फिर मैथ्स का कैसे करेंगे? मैथ्स का भी आप नहीं हमारा नहीं कनेक्ट कराओ सर किसी से। मैम, मैथ्स के लिए मैं ना आपको नंबर देता हूँ एक्चुअली। मेरी टीम है, यस राकेश सर। जी
मैं आपको नंबर्स शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये यस राकेश सर। मिश्रा जी हैं। यस सर। आपने सेशन नहीं अटेंड किया था क्या मैम, संडे वाला कभी? नहीं सर, मेरे को नहीं आइडिया तो था हाउ डिड कि। यू कम टू नो अबाउट दिस? नहीं सर, मैं अभी वाला तो किया था। अभी अच्छा, वाला। संडे वाला। हाँ, इंट्रोडक्टरी तो किया था, मैथ्स वाला नहीं किया था मैंने। अच्छा, नहीं नहीं, मैथ्स वाला तो करवाया भी नहीं मैंने। हाँ मैम ये सर। राकेश जी का नंबर है, आई आई होप यू कैन, ये सर, आई दिस पुट स्क्रीन द इज विजिबल टू स्क्रीनशॉट। यू। यस सर। या मैम, ये ना आपको सब टीचर से कनेक्ट करवा सकते ठीक है, हैं, ठीक ठीक है। है। पर मेरा सजेशन ये है, यू स्टार्ट विथ फिजिक्स, वेट फॉर 2-3 मंथ्स एंड देन एक बार बच्चे को, मैम क्या होता है ना, अगर आप उसको ज्यादा एक साथ आप सारे चालू करवाएंगे ना तो उसके पास टाइम नहीं बचेगा। हाँ सर, वो और तो अगर है। उसके पास टाइम है तो आप सब चालू करवा दें। हाँ सर। मैं हमेशा पेरेंट्स को डिस्करेज करता हूँ कि एक साथ 3 सब्जेक्ट चालू मत करें। आप फिजिक्स से चालू करवाओ, पहले 1.5 महीना तो मैथ्स ही पढ़ेगा, यस उसके बाद सर। अगले 1.5-2 महीने में उसके फिजिक्स के 2-3 चैप्टर हो जाते हैं। अब मैथ्स की बारी आती है, क्योंकि मैथ्स उसको आखिरी तक पढ़ना है, तो मैथ्स का सिलेबस कभी ना खत्म होने वाला। तो देन यू स्टार्ट विथ मैथ्स। तो उसका नाइन्थ नाइन्थ के मिड में, अभी तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ नाइन्थ इज गॉन। तो हालांकि हम शुरू हुआ बोलते हैं, पर अप्रैल से शुरू हुआ है ना मैम, अप्रैल मई नहीं जून सर, जुलाई। अब उनका अब स्टार्ट होगा। हाँ अच्छा, हाँ IB बोर्ड वालों का अब शुरू हुआ है, यस सर। तो यस। अभी भी टाइम है। तो आप अक्टूबर सर नवंबर में चालू करवाएंगे, हाँ वो सर। काफी आराम से वो चलेगा फिर। ठीक है सर सर। आपने रुकने को बोला था। हाँ 2 मिनट कार्तिक, 2 मिनट। गॉट इट सर। ठीक है मैम, सर एक रिकॉर्डिंग भेज दीजिए एंड आई प्लीज कैन प्लीज। कनेक्ट विद यू 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 आफ्टरवर्ड्स। यू हैव शेयर्ड योर नंबर मैम? यस सर, माय नंबर। हाँ मतलब मैम, यहाँ पे मैंने बोला था बच्चों यस को सर, शेयर यस करने सर। के लिए। यस। यहाँ पे है ना आपका नंबर? मानवी, यस सर, मान का छावा। मदर अच्छा, शीतल। हाँ हाँ यस सर। हाँ। यस। हाँ हाँ, मान का मान के छावा साथ, शीतल। यस सर। grade 9, यस। तो आई सेंड यू। ठीक है सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू। नमस्कार। हाँ कार्तिक जी। सर करमन। हाँ अच्छा, हाँ करमन, एक सेकंड, तुम भी बोलो, बोलो क्या क्या बोलना चाहते हो? सर प्रोसीजर क्या आगे होने का, लाइक प्रोसीजर जो अभी करमन, करंट। देखो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, तुमको वेक्टर और कैलकुलस आता है क्या? नो सर, अभी नहीं आता। नहीं आता है ना? कैलकुलस शुरू होने वाला है मेरे वेडनेसडे थर्सडे वाले बैच, ठीक है, यू स्टार्ट विद दैट बैच, ठीक है। वेक्टर्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, उस बैच में वेक्टर हो गया है तो उसका कवर अप सेशन होगा कुछ, ठीक है, 4-5 सेशंस होंगे कवर अप। तो वेक्टर और कैलकुलस हुआ, उसके बाद बेटा कुछ नहीं, एक, तुम ये मान लो कि अगले 3 हफ्ते के बाद फिजिक्स विल स्टार्ट, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो तुम 9th में हो अभी, यस सर। तो by the time you end your 9th standard, your syllabus of these 6 chapters will be completed. I have explained it to your dad. You have shared your number with me. यस सर। हाँ, तो करमन अंजन, या तो पहले वो खत्म होगा, 11th का पोर्शन, सॉरी वो 6 chapters, then you will have choice if you want to repeat it or if you want to go ahead with the upgrade batch. वो तुम्हारा चॉइस है। अपग्रेड इज अ डिफरेंट बैच ऑल टुगेदर, वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम 7th chapter on, एंड बाय द टाइम यू आर इन योर 11th standard का 2 या 3 महीने हुआ होगा, 2027 का अगस्त, ठीक है, ये तुम दिमाग में बैठा लो, 2027 का अगस्त, योर सिलेबस ऑफ फिजिक्स विल बी completed to such an extent that you will be able to solve almost all the questions of JEE mains level, or you are preparing for which exam? जे एडवांस। JEE advanced, और up to very good extent 30 to 40% of JEE advanced। मैं JEE advanced इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अभी तुम्हें 9th 10th भी करना है, उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा ही जाएगा, और तुमको सब ध्यान देना पड़ेगा। मैं तुमको सजेस्ट कर सकता हूँ व्हाट नेक्स्ट, पर वो तुम कर पाओगे या नहीं वो तुम्हारे ऊपर, इट्स ऑल अप योर कैपेसिटी। बट यस, in 11th standard what we do is we go ahead with higher order books like Irodo, like um, Olympiad papers, like that, ठीक है। तो देन यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। तो वो वहां से फिर वो और रिफाइनिंग जो होती जाएगी। बैचेस हुए, सॉरी, तो जो बैचेस होए गए उसमें लाइक 11th के स्टूडेंट्स होएगा, मेरे जैसे होए गए बच्चे। अभी अभी
अभी जो बैच चालू होगा जो उसमें तो आप सब छोटे बच्चे हैं। बैच नहीं, जो आप कह रहे हो वेंसडे थर्सडे वाला बैच जिसमें वो वेक्टर सब चल छोटे रहा है, बच्चों का बैच, सब छोटे बच्चे सब हैं। छोटे हैं। हाँ, 7th 8th 9th। ठीक है 7th का सर। कोई नहीं है उसमें, 8th और 9th का। 7th का तो एक दो ही बच्चे आते हैं हर साल, उसमें कोई बहुत नहीं होता। ठीक है करमन। कार्तिक जी आइए सामने। आप दिखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे आप? सर मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकता सर। अच्छा, ठीक है। तो तुम सवाल पूछो, क्या सवाल है? नहीं सर, वो एनएससीपी के बारे में पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, मैं एनएसएपी पढ़ाता हूँ कार्तिक, पर तुम अभी कहाँ तक, तुम्हारा लेवल क्या है? अभी तुमने वेक्टर कैलकुलस कर लिया है बेटा पूरा? सर मैंने ये मोशन स्ट्रेट लाइन तक कर लिया है कहाँ ऐसे से मतलब पढ़ा है? बेसिक नॉलेज आती है। मैं ऑप्टिक्स किया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास की खत्म कर दी है ना, 10th क्लास नहीं, तक की। 10th से कोई मतलब नहीं बेटा। तुम अभी 9th में हो ना? यस सर। ठीक है। तुम देखो, सर ऑप्टिक्स खत्म कर दी है मैंने। ऑप्टिक्स खत्म कर दिए तुम। ठीक है। तो खत्म का मतलब ये नहीं है कार्तिक, खत्म का मतलब होता है तुम जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं सर, जेई मेंस तक हो जाते हैं। जेई मेंस तक हो जाते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट कार्तिक? सर जो ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट अमिट करता है और जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं। ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव में बताओगे तो क्या बताओगे इसको? अच्छा चलो बताओ, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। नहीं देखो, सर, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। रियल एंड इन्वर्टेड बताता है प्लेन मिरर, पक्का? यस सर। रियल इमेज बनाता है प्लेन मिरर? रियल इमेज बनाता है बेटा, पक्का? व्हाट इज रियल इमेज? बताइए सर, व्हाट इज रियल इमेज? सर रियल इमेज में सर वो अ, हम एक सेकंड सर वो सर रियल इमेज कलेक्शन होती है उसकी फोकस पॉइंट मेड बाय कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज। बेटा, आई एम सॉरी टू से, तुमको भी बहुत सारा पढ़ना है ऑप्टिक्स में। ठीक है, तुमने कहा जेई एडवांस जेई मेंस लेवल का हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें तुमसे सवाल हाँ पूछे सर, मैंने पर ये। वो सर हाँ, वो ऐसे बेसिक बेसिक आते हैं ये मतलब स्केलर वेक्टर ये ठीक। चीजें आती है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। तुमको देखो, अभी तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है, तो अभी तुमको, अगर तुम एनएससीपी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो तुम्हें यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है। तो माय सजेशन इज, अगर तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में एनएससीपी देना है, ठीक है कार्तिक, अगर तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में एनएससीपी देना है, तो तुम्हें देखो, अगर तुम्हें कैलकुलस आता है, ठीक है, कैलकुलस तुमने कहाँ से सीखा है कार्तिक, मुझे बताओ। सर ये एच सी वर्मा है ना बुक। उतना ही सीखा है तुमने? हाँ सर, उतना ही सीखा है। हाँ, तो फिर तुमको कुछ नहीं आता है। ठीक सर है। मतलब इसका सर इसका जो इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम? इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे बेटा? सर एक मिनट से सॉल्व करता हूँ। नहीं, सुनना मेरी बात। तू देख, तू ये बता दे बस, कर सकता है कि नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं मेरे लिए। हाउ विल यू मूव अहेड इन दिस क्वेश्चन, इतना ही बता दे बस। सर देखो, सर इसमें हमारे पास रूट एक्स इंटीग्रेट रूट इंटीग्रेट एक्स रूट 1 + x² dx हम्म। सर दिया हुआ है ना, तो सर हम यहाँ से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से तो कर लेंगे नहीं। तो तुमको नहीं होता है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझो और इसको एक्नॉलेज करो, तुमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो ओके सर। तुम ईमानदारी से अभी मेरा, अगर तुमको शुरू करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मूव, तुमको पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने अटेंड किया था क्या सेशन मेरा अभी संडे को, या किसी भी संडे को? यस सर किया था। वेरी गुड। तुमने अपना नंबर शेयर किया है यहाँ पे? यस सर किया है। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? पर यहाँ तो नहीं कार्तिक दिख रहा है तुम्हारा नंबर। कार्तिक बसोता सर भेजा था आपको। नंबर क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? भेजा है तो नंबर दिखना चाहिए ना। दोबारा बता मुझे नंबर तेरा, दोबारा भेज।
तू एक्चुअली सर छोड़ गया होगा ना बीच में, उस समय तूने लिखा होगा तो नहीं दिखेगा मुझे ये। सर तेरे चैट में अभी भेजना, चैट में। हाँ भेजो, चैट में लिखो उसको, तब तो टीम कांटेक्ट करेगी, तुमको ढूंढते ही रहेंगे, नहीं तो हम कहाँ से हम तुमको कांटेक्ट करेंगे बताओ। हाँ दिखा है तुमने, नंबर मिला मुझे, 842 को आया है। ये किसका नंबर है, तुम्हारे पिताजी का है कि तुम्हारा नंबर है? सर ये मम्मा का है। हाँ तो मम्मी का नाम लिख दे बेटा, कैसे पता चलेगा किसका नंबर है ये? तो देखो अभी ना बेटा, अभी वेडनेसडे थर्सडे वाला जो बैच है उसमें कैलकुलस शुरू हो रहा है, ठीक है, एकदम जीरो से शुरू होगा, ठीक है। इसी और बैच में सर, ये जो आप पढ़ा रहे हो अभी इसी बैच में? नहीं नहीं, ये बैच नहीं है, ये तो ओरिएंटेशन सेशन होता है नए बच्चों के लिए, ठीक है। तो वहां से शुरू करो, और हैव पेशेंस। तुम 11th के शुरुआत तक, याद रखो 11th के शुरुआत तक तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुमको मैं अलग से एनएससीपी की तैयारी करवा दूं, ठीक है। पर उसके लिए तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ, आप मुझे जिस लेवल पे लेके जाओगे उस लेवल तक मैं जा सकता हूँ, ठीक है कार्तिक? यस सर। करो। पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी बेटा, अभी तुमको देखो कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा है, पर अभी बेटा सीखना बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे अभी इंटीग्रेशन दिया ना मैंने, मेरे यहाँ ये 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे कर लेते हैं बेटा, जिन लोगों ने पढ़ लिया है मुझसे। तो सर पढ़ना वो पड़ेगा ना। सब पढ़ा मैंने भी था, पर वो आयु कैम में देने लग गया ना, तो फिर उस पे मैं फिजिक्स थोड़ा कम ही पढ़ता था। नहीं नहीं, ये एक साल फिजिक्स नहीं पहले है, की बात है। ये इंटीग्रेशन है, फिजिक्स नहीं है ये। मतलब इंटीग्रेशन आयु कैम में नहीं आता ना इंटीग्रेशन, उसमें अच्छा नॉन अच्छा अच्छा रूटीन। अच्छा। तो हाँ हाँ उसमें हाँ सिर्फ हाँ। वो नंबर थ्योरी कॉम्बी ऐसी चीजें आती है। ओके 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 ओके। वरना देखो ये नहीं मैं समझ गया, तुम्हारा दिमाग तो अच्छा होगा, अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना इसकी, तो तुम फटाफट पिक कर लोगे। तुम अच्छे से एक बार शुरू करो, ठीक है। और अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हें 11th वालों के साथ बैठा के पढ़ा दूंगा, तुमको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस, यस सर। ठीक है। हम्म। यस सर करो, शुरू सर। करो, शाबाश, हाँ। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो मैंने वो चीजें रिवाइज नहीं की है ना, तो उसमें टाइम लग गया। पहले मैंने जूनियर साइंस की तैयारी की थी ना 8th में। हाँ हाँ। हाँ तो उसमें फिर सर मेरे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, मेरे ऐसे ही 40 के अराउंड मार्क्स आए थे। तो तुमने बेटा पूरा, तुमसे सिलेबस ही नहीं हुआ होगा फिजिक्स का, तो कहाँ से नंबर आएंगे? हाँ सर, वो वही 3 4 महीने पहले शुरू किया था मैंने। और 8th में नहीं, तुम 9th में, 8th और 9th दोनों में दे सकते थे तुम। यस सर, अगर इस देखो बार भी अभी, अभी तुम 9th में हो ना, इस बार दे सकते हो गई तैयारी तुम्हारी, फिजिक्स का हो गया सिलेबस कंप्लीट। नहीं, अभी सर पढ़ रहा हूँ अभी भी। अगर तू आएगा ना मेरे पास, तो मैं अगस्त से लेके अक्टूबर तक फिजिक्स के, मेरे बच्चों को मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स की दोबारा तैयारी। मतलब जो टॉपिक छूट जाता है ना, जैसे मेरे यहाँ बच्चे आते हैं अभी, तो वो मैकेनिक्स तक तो पढ़ लिया उन लोगों ने, पर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स रह जाता है जैसे उन लोग, तो मैं दोबारा करवाऊंगा उनको। तो तुम आओगे तो तुम्हारी फिजिक्स एक बार और तैयार हो जाएगी एनसीपी एनएससीजेएस की, ठीक है। यस सर। करो, ठीक, चलो। सर अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास कब अब होगी? पहले, अब बेटा एनरोल करना होगा, है ना। ये ओरिएंटेशन सेशन होता है, इसको हम लोग बच्चों से मिलना, बात करना, बच्चों की क्या जरूरत है वो समझना, इसके लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू एनरोल। तो माई टीम विल गिव यू अ कॉल, योर पेरेंट्स, मेरी मेरी टीम जो है, मिश्रा जी बात करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा से। फिर अगर उनको ठीक लगेगा, तुमको ठीक लगा, तुमसे फीडबैक लेंगे वो, तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, तुमसे पहले हामी भरवाई जाएगी ना, मेहनत करोगे कि नहीं। फिर तुम अगली क्लास, अभी कल ही है तुम्हारी, तो अगली क्लास तुम्हारे बैच की, ठीक है। तो कल से शुरू करो, ठीक। यस सर। चलो बाय, टेक केयर। शिवम डांगी, माय टीम विल कनेक्ट विथ यू, ओके। कुछ समझ आया बेटा? आज तुम्हारा माइक भी तो नहीं चला, आज तुम्हारा क्या बताएंगे तुम? चलो ठीक है, थैंक यू।